41 सम कोसाइन पाई अपॉन होना चाहिए 3 पाई अपॉन एन ओके इक्वल्स तो ये तो क्या वाला अपन हजार बार लाइक 2 साइन ऑफ एन डी अपॉन 2 एन कितना है इसमें सॉरी ओके क्या है ये ये सही नहीं हो रहा है ओके सो यार गला 1 to 17 यानी कि 16 का डिफरेंस अपॉन 2 यानी कि 8 8 plus 1 9 so n is just 9 9 pi upon n of course so 9 of yeah okay so n is just 9 and then you want d upon 2 so d क्या है 2 pi upon 9 so upon is just pi upon 9 क्योंकि sin pi आ जाएगा इसमें या जस्ट d upon 2 चाहिए यानी कि pi upon 9 आएगा then cosine of जो भी आने वाला है we don't care about that because already अपने को 0 मिल गया this is just wait that's not 0 for some reason how could you say so it has to be 0 right because 16 upon 2 is 8 so 8 steps plus 1 मतलब कि 9 इसमें टर्म्स है so this should have worked out huh ये ऐसे कैसे हो गया no, it should not be like any of these guys I'm pretty sure ये तो चीज ये 0 होता है यार ये जस्ट 0 होता है इन लोगों ने गलत किया है there's no way कि ये 0 ना हो I mean like okay pi upon 9 है यहाँ पे क्या है यहाँ पे है it's like 18 मतलब 2 pi minus yeah it's still weird but whatever जैसे सारे जिनका think about this thing like e power I odd pi upon 9 ये सारी चीजों के बारे में सोचो ना like इनकी जो powers right so this is the power of n or I should say this is the power of 9 that is just equal to -1 right तो ये जो सारी चीजें हैं ये रियल पार्ट्स है ऐसे चीजों को लाइक z पावर 9 इज इक्वल टू -1 या फिर +1 इक्वल टू 0 इसके जितने भी रूट्स आएंगे कितने रूट्स आएंगे इसमें 9 रूट्स आने वाले हैं और इसमें कितने 9 एग्जैक्टली राइट ओके कुछ कुछ कोसाइन वैल्यूज रिपीट हुई है बट देन इसमें यू नो वो 9 रूट्स यूनिक हो जाएंगे राइट या वो 9 यूनिक रूट्स होने वाले एनीवे द मेन पॉइंट इज कि या लाइक दैट हैज टू बी हैपनिंग ओके द मेन पॉइंट इज कि वो जो रूट्स है उनको जो सम है दैट्स इक्वल टू 0 सो ये तो सिर्फ उनका रियल पार्ट ये पूरा जो है सम वो रियल पार्ट है वो सम का सो ये भी 0 ही होगा ना आई मीन दैट्स ऑब्वियस इसलिए इतना पूरा करने की जरूरत नहीं है सो ऑफ कोर्स इसका आंसर 0 है व्हिच इज नॉट इन ऑप्शंस ओके 42 is the sum oh sorry the radius of the circle touching the parabola this thing at 1,1 and having the directrix of given parabola as a diameter is touching the parabola at 1,1 and having a directrix of the given parabola as diameter directrix as diameter that's unexpected okay उसका basically जो उसका center है that is lying on the directrix right that's what you're saying तो हमारा 1,1 है राइट यहाँ पे पॉइंट और मैं डायरेक्ट से यहाँ पे x इक्वल टू -1/4 और सेंटर हमारे यहाँ पर है लाइक ये जो है वो परपेंडिकुलर है उससे फॉर सम रीजन ओके वेरी वियर्ड यू कैन जस्ट फिगर आउट कि सेंटर क्या होने वाला है इन दैट केस राइट या मतलब तुम ये वेक्टर ढूंढ सकते हो या एक्चुअली डूएबल सो बस ये लाइन को ढूंढ लो व्हाट्स द नॉर्मल एट दैट पॉइंट टेंजेंट क्या होगा y इक्वल टू x ओके y/1 इक्वल टू x प्लस how do you like 1/2 times x plus 1 so y इक्वल टू 1/2 x प्लस 1/2 अपना या जो भी है हम लोग चाहिए we want the normals like y इक्वल टू -2x प्लस हमारा कांस्टेंट बट यहाँ पे वो कांस्टेंट क्या हो जाएगा जस्ट 2 + 1 which is 3 yeah because it is gonna work out so ये अपना नॉर्मल है and we just want when is this going to touch the directrix which is like x equal to -1/4 से पुट करो it's just oh god मेरा तो क्लास पूरी तरह से खराब हो चुका है I mean yeah so like yeah which is just 10 upon wait what sorry 7/2 so 0,7/2 पे टच करेगा मतलब कि वो सेंटर मिल गया बेसिकली and what do you want you just want the radius right you just want this distance basically oh come on seriously this was just a piece of cake so
Yeah, मतलब 0,7/2 and ये चीज 1,1 है equal distance, which is square root of 1 plus और ये क्या चीज क्या हो जाएगी like 2.5 का square I guess because right, so this is like square root of 1 plus 25 upon 4 which is square root of 29 upon, oh ये तो सही नहीं हो रहा है because इसमें है ही नहीं, हाँ ये कैसे हुआ? I mean yeah, so center पे तो भी यहाँ पर है, that's what you're saying right, so you just want this distance, you figure out कि normal कहाँ पे touch करने वाला है, that's where the center will be, so what's the problem? I don't see any problem, right? It's equal to negative 1.4. Yeah, just 0 comma. Oh shit, it's not 0. It is this thing. It's actually negative 1/4. क्या कर रहा हूँ मैं आके? Negative 1/4 comma 7/2. Okay, cool. तो ये क्या होगा एक्चुअली? Fast forward of 5/1. Next question. 43. 43 is y n equal to this thing. So y is a function of n. Okay. Then the limit as n tends to infinity of dy n upon dx at x equal to 1/2 is. So basically dy upon x at x equal to 1/2. So as n tends to infinity, वो चीज क्या होगी, right? Yeah. Okay, no big deal. So on a derivative of this thing. Well, first of all, just take the natural log. So natural log of y is equal to what? It's equal to like x plus x square plus x cube, so on till x power n. So you know, like dy upon x will just be this thing 1 plus 2x plus 3x square, so on till nx power n minus 1. And you want like x equal to 1/2 पे यानी कि 1 plus 2 times of 1/, yeah, whatever, वो चीज as n tends to infinity, right? That's what you want. So yeah, मतलब basically क्या, you know what this is, right? It's just the rate of this thing, which is, I mean जब n tends to infinity हो जाएगा, this thing is like, do I really have to do the thing properly? I don't know. Maybe अगर अपन normally करें then it's also good because, right? I mean yeah, just n, just extend this, you know, just extend this. So like ये जो चीज होगी, this will just become like 1/1 minus x, okay, x upon minus x, whatever. Big deal. Okay, 1/1 minus x minus 1 करा. Yeah. Okay. And then फिर अपने को इसका डेरिवेटिव देना है, which is like negative positive 1/1 minus x का square. वो तो गया, मर गया वो. Right. And then you want like x equal to 1/2 पे. So that's actually much easier. So यहाँ पे just 4 is the answer. E क्यों आ रहा है इसमें? Oh, okay. So like that's the derivative of natural log of y. So मतलब कि y dash upon y equal to 4. But y क्या होगा? At x equal to 1/2, right? So natural log of y is this thing, is like 1/1 minus x, which is 2 basically. So natural log of y equal to 2, y equal to e power 2. Wait, what? Oh, minus 1. 2 minus 1. 1. Y equal to e. Okay. So 4e, which is the next question. 44. गला खराब हो गया. 44. Alpha, beta, gamma are angles of triangle. If sin alpha plus sin, okay, whatever. Then gamma is equal to, okay. So sin beta तुम्हें दिया है, equal to sin gamma times cosine of alpha plus cosine of beta. Oof. Maybe like just, you know, okay, कर सकते हैं. I don't particularly like this. Whatever. Then cosine of alpha. हाँ, तो ये कैंसिल हो जाएगा अपने आप. बढ़िया. Sin gamma. ये तो गया अपने आप ही. Right, because acute angles. So okay, sorry. Angles of triangle. फिर of course ये चीज pi upon 2 नहीं सकती, right? Yeah. Which means कि और pi upon से बड़ी नहीं हो सकती, of course. So first of all, right, this is what happens. मतलब इसीलिए tan of alpha plus beta upon 2, but like alpha plus beta is just pi minus gamma. So basically like ये cot हो जाएगा ना, cot of gamma upon 2 is equal to sin gamma, right? So that's like saying 1 is equal to tan gamma upon 2 and then sine gamma. But then sine gamma is like 2 tan gamma upon
1 plus tan gamma squared. Oh, square here, which just means like 2t squared is equal to 1 plus t squared, yani ki t squared equal to 1. So tan squared gamma upon 2 is equal to 1. So like gamma upon 2 will just be on angles triangle, right? So there's only one way, ki pi upon 4 ho jaye, which means gamma is just pi upon 2. Awesome. So that's like what? Secant inverse of 2, cosec inverse of no, cot inverse of 0. ये सही नहीं हो रहा है कुछ. ये कैसे हो गया? We got t squared equal to 1. How did this happen? This should have worked out. Cot inverse of 0. Okay. Oh yeah, that is pi upon 2, of course, because cot inverse, that's the range. Yes, so C is the correct answer. Next question. 44th done. Let's go to 45th. 45th, if A is an idempotent matrix satisfying this equation, then I is the unit matrix of the same order as that of A. Okay, idempotent matrix means क्या? A squared equal to A basically, right? The I is the unit matrix of same order as of A. Okay, then the value of alpha is, so ये चीज का inverse is equal to I minus alpha A. That's very interesting. मतलब इन नॉर्मल चलता है तो अपने को 1 मिल जाएगा, राइट? आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाएगी. ओके, so basically this thing I minus 0.4a times 1 minus, sorry, I minus alpha a, that will just give us what, the identity matrix. So expand कर दे, just like I squared I minus alpha plus, I know normal algebra नहीं होता है, but then come on यार, ये identity matrix है तो वो हो जाता है अपने आप. Plus 0.4 alpha a squared is equal to identity matrix, but then you know like a squared is just a basically. So yeah, ये चीज मर जानी चाहिए. So this means like 0.4 alpha is equal to alpha plus 0.4. So like what, 0.6 alpha is equal to negative 0.4. मतलब कि alpha is just negative 4.6 and negative 2.3. That's alpha, negative 2.3. So C is the answer. Next question. 46. 46 is the line Lx plus my plus n equal to 0 will cut this ellipse in points whose eccentric angles differ by pi upon 2a. Okay, so इसको कट करेगी ये line in points whose eccentric angles differ by pi upon 2. Okay, like इसको 8 whatever. Oh, so you know what, like interesting, let's just say this thing x upon right, so like this is x equal to a times u and y equal to b times, I know मैं q कर रहा हूँ, such that this equation becomes like u squared plus v squared equal to 1. So basically ये अपना auxiliary circle है but shrunk by a lot. तो ये जो 2 पॉइंट्स यहाँ पे कट करने वाले थे उनको भी अपन ट्रांसफॉर्म करेंगे थ्रू दिस ट्रांसफॉर्मेशन. तो अपना जो अब 2 पॉइंट्स u v वाले जो पॉइंट्स रहेंगे वो एक्चुअल में यानी आप पाई बाय 2 एंगल से रिफर कर रहे हैं. दैट इज वो एक सर्कल पर है एंड यूनिट सर्कल ऑफ कोर्स, और वो पाई अपॉन 2 से रिफर कर रहे हैं. इतना ही है. और ये जो लाइन है वो क्या हो जाएगी, L टाइम्स A टाइम्स U प्लस MB टाइम्स Y प्लस लाइक N जो भी है 0. तो अपने करना क्या है, ओके दिस लाइन कट्स एट दीस टू पॉइंट्स लाइक जहाँ पे पाई अपॉन 2 का डिफरेंस है, व्हिच मींस इसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम दिस दैट इज हाउ मच, अपने को वही देखना है ना. या लाइक दैट इज जस्ट पाई अपॉन 2, ये स्प्रेड कर रहा है पाई अपॉन 2 स्पेस, दैट जस्ट मींस ये पाई अपॉन 4 हो जाएगा. सो दिस इज r and 1 and this is like sine of that, so 1 upon square root of 2, and again this distance is just 1 upon square root of 2, right? Yeah, it's just one distance from that, so from 0 comma 0. Good thing is it is just 0 comma 6, like upon square root of LA ka square plus MP ka square. This is equal to 1 upon 2, which sorry 1 upon square root of 2, which just means like 2n squared is equal to L squared A squared plus M squared B squared. Yeah, so कहाँ पे गया अपना L squared A squared M squared, नहीं ये नहीं, L squared A squared plus M squared B squared, yes, that's equal to 2n squared. So B C is the answer. Next question. 47. 47 is if the roots of this thing are real and equal, then
ओके, oh equal, so d equal to 0 basically. जो भी है, so just like b square times c minus a का square is equal to what, 4ac times b minus c times a minus b. Wait, what do you mean by the roots of this यहाँ पे दो वेरिएबल्स क्यों है, x square plus what are real, wait, what do you mean by the roots, ये सिंगल वेरिएबल तो है नहीं, फिर y स्क्वायर क्यों जोड़ दिया है, something is not making sense over here. Yeah, right, something is just not making sense. ये क्या कर दिया इन लोगों ने यहाँ पे, वो भी मैं कॉमन निकाल सकता हूँ, yes that's doable, but what do you mean by the roots, roots किस चीज के, x के की y के की क्या, real and equal. I guess तुम x और y की वैल्यूज रियल एंड इक्वल ऐसा बोल रहे हो, but that's like saying कि ये जो पूरा सम है जीरो बेसिकली. I have no idea कि तुम क्या कर रहे हो. अच्छा, ये अगर इक्वेशन है तो अपन क्या कर सकते हैं, b squared and c minus a का स्क्वायर जो भी है, I'll just have to expand this anyway. आई डोंट अंडरस्टैंड दिस, यहाँ पे दो वेरिएबल्स का मैं क्या क्या करूँ, क्या कौन से रूट्स, x की बात कर रहे हो, y की बात कर रहे हो, कौन इक्वल है वो, नॉट गुड. ABCR and HPGP, what is this seriously. I guess I just say कि y भी constant था, फिर तो वो अपने आप निकल जाएगा, right, because yeah we just make x upon y the new variable, वो निकल जाएगा, which means that okay this would be the condition hopefully. So ये क्या होगा, b squared c squared plus b squared a squared minus 2acb squared is equal to 4ac times like b, oh इसमें नेगेटिव आएगा ना, so इसको प्लस यहाँ पे डाल देंगे, plus 4ac times b squared minus what is this like ab minus bc plus ac, right, so ये क्या हो जाएगा, b squared c squared plus b squared, हाँ वो तो हो जाएगा ना, it's basically like this thing 4ac b squared, तो फिर subtract करके just get 2ac b squared, then you also get like a squared is okay, so 4a squared c squared, okay interesting. फिर यहाँ पे आएगा a squared bc, what, so minus 4a squared bc minus 4 okay c squared ab, और क्या है अपने पास में, उसके अलावा कुछ और नहीं है, ये तो टू अपन ऑलरेडी यूज कर लिया है केस. नॉट गोइंग गुड, नॉट गोइंग गुड यार, ये तो सही नहीं लग रहा, वो ऐसे वगैरह मैंने सब कुछ तो सही नहीं किया, व्हाट कुड हैव गॉन रॉन्ग. ओके, और वो जो अपना था 20 पर 6 प्लस 20 पर 1 वो अभी की भी वहीं पर है. हाउ एम आई सपोज टू सॉल्व दिस इन दैट केस, या दिस मेक्स नो सेंस, कुछ और कुछ तो भी और. व्हाट इफ ये ऐसा बोल रहे हैं कि x और y इक्वल हो गए, ऐसा कुछ तो भी है. I mean, if that is the case, then फिर अपने आप ये okay, that just means like ab minus ac plus, oh ये तो अपने आप वैसे ही जीरो हो जाएगा, right, that will be zero in any case. हाँ, oh god, this is the condition that you got. What do we do after this now? Just make c minus a equal to something. Yeah, वो कर सकते हैं, but that's just not going to give us anything nice. So why do that? Okay, ये हुआ अभी तक, और क्या बोल रहा है, और क्या है, और ऑफ कोर्स ये चीज लाइक बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर. फर्स्ट ऑफ ऑल बी स्क्वायर कलेक्ट करो, लाइक बी स्क्वायर टाइम्स या क्या हो जाएगा ए प्लस सी का स्क्वायर, या फिर यहाँ से कांस्टेंट है, फिर लाइक माइनस 4b कॉमन, हाँ या माइनस 4abc कॉमन, इनफैक्ट यहाँ पे जस्ट a प्लस बी, नो a प्लस सी आ जाएगा, राइट. और क्या है, प्लस 4a स्क्वायर सी स्क्वायर आई गेस, right, that's equal to 0. Awesome. Wait, oh I see, just b times of a plus c minus 2a c, yeah, minus 2ac का square is equal to 0, which yeah that was the thing, so just
AB plus AC is equal to 2AC. तो divide करो ABC से, just 1 upon C plus 1 upon B is equal to, if it should be B over there, BC चाहिए ना यहाँ पे, 1 upon A होगा in that case, equal to 2 upon B. So yeah, it's just in harmonic progression. Okay, so ABC are in HB, which is C. Next question, 48. 48 is if the point representing the complex number Zn is a point on or inside the circle having center 1 and it is A, then the maximum value of this thing is, okay, the point on or inside the circle having center 1, and radius A. Wait, are you serious? Center 1. This is very weird. Okay. Maximum value of Z1 is okay, where A belongs to what? वो जो भी है. अब ये A क्या है? Okay, ये यहाँ पर है. But how would you, okay, इसमें कुछ खास प्रॉपर्टीज वगैरह है नहीं, and then what is this thing? Oh, it's just this, right? सभी को तुम सेम भी कर सकते हो ना? Does it even make a difference? No. सबको तुम मैक्सिमम डिस्टेंस पे रख दो. So सेंटर तुम्हारा 1 है, तुम्हारा सर्कल ऐसा है, I guess, like मैक्सिमम डिस्टेंस. So Z का मैक्सिमम कब रहेगा यहाँ पे? So 2 कितने बार 2 आया इसमें? N times. So well, that was not expected. Oh, radius A, you should have told me. Oh, okay, so like हर एक, हाँ ठीक है, तो सबको तुम अलाइन करो along positive axis. मतलब कि क्या, पहले पहले क्या आएगा, जैसे 1 plus A, फिर 1 plus 1 plus 1, सॉरी, 1 plus 1, फिर plus 1 plus 2 एंड चलते जाओ n टर्म्स तक. सो लाइक क्या होगा ये n टाइम्स, oh god, this is very 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 weird. So like वो तो n हो गया, and then plus, am I sure that is the thing? 2 or फिर n times, right? It's सब one होता है. Anyway, just like 1 plus 2 plus till n, of course. So you know, n times of n plus 1 upon 2. मतलब क्या होगा ये, n times of n plus 3 upon 2, which is a next question. 49. 49 is like y equal to 0 be a general solution of the of this thing. Okay, so y of x is 0. Just y equal to 0 put kar do, like this thing is gone. Wait, it's the general solution of this thing. Very very weird. X times x1. Wait, what? Huh? No, how can that be a general solution for this thing? Then y of 2 months. Wait, what? Y of x equal to 0. मुझे नहीं समझ रहा तुम क्या बोल रहे हो. y of x equal to 0. बेसिकली y of x बोला था, आई थिंक ये लोग इक्वल टू 0 करने की जरूरत नहीं है, वो पागल कर रहे. ठीक है, इसका जनरल सॉल्यूशन पहले ढूंढ लो. ओके, x टाइम्स ऑफ x minus 1 dy upon dx minus y equal to x square. ओके, समझा समझा. x टाइम्स ऑफ x minus 1 है इसमें. इसका डेरिवेटिव कैसा होगा? इट्स लाइक देखा सा लग रहा है, बट ओके, सो x स्क्वायर माइनस x का डेरिवेटिव इज लाइक 2x minus 1. मुझे वहां से x को लाना पड़ेगा. माइनस y इज इक्वल, starting to hate this. Well, you could just divide by that, right? Yeah, you could just divide by that. Okay. Okay. Then we divide here, and then I mean, okay, cool. But how is that going to help? Divide करने से कुछ थोड़ी ना अपना change होने वाला है. Still just that problematic, right? ये ऐसा हो जाएगा ना, y dash minus y upon x times of x minus 1 is equal to x times of x minus 1, right? Okay, very weird. So करो फिर इंटीग्रेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई. क्या e power, let's simplify कर देते हैं, see if that works out somehow. So this is like y dash minus okay, so y dash plus y times, अपने को negative 1 चाहिए ना ऊपर, right? So 1 upon x minus 1 upon x minus 1, because yeah, फिर वो मर जाएगा, and then it works out. So it's just equal to x times of x minus 1. x minus 1 लिख रहा है, who cares? X minus x. Okay. Right, this is the thing.
अच्छा अब ये सोचो इसका जो डेरिवेटिव आएगा इट्स लाइक wait this is not a derivative of anything something's not going correct something's not going correct over here क्या गलत हुआ क्या गलत हो गया मे बी लाइक एक्स स्क्वायर से डिवाइड करो सिर्फ एक्स स्क्वायर से डिवाइड करो दैट वुड वर्क और लाइक मे बी सिर्फ एक्स माइनस वन स्क्वायर से डिवाइड करो हु केयर्स दोनों सेम ही चीज होगी so just x square से डिवाइड किया then it's like x minus 1 upon x and then y dash and negative y upon x square is equal to x minus 1 का square whatever so this basically becomes what yeah just y dash minus wait what minus wait that doesn't make any sense minus y dash upon x but I don't want minus y upon x square wait इसका नेगेटिव कैसे फिर वो यूज ही नहीं होगा in that case this doesn't make any sense it should be what's going wrong what's just but यहाँ पे मुझे प्लस y dash upon x चाहिए था that would have made sense but this it doesn't this कुछ और हो रहा है यहाँ पे क्या कर सकता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ देन इसका इंटीग्रेशन इस टाइप से हो रहा है ओके वेरी वियर्ड one thing why can't I think about anything यार ये सही नहीं हुआ how can I even go with it this is not correct that's a problematic thing यार ये सही नहीं है can't even just divide by x square this is not going good ये मतलब अगर यहाँ पे सपोज प्लस होता then would have made so much more sense right yeah it would definitely have made much more sense can't you do anything for it no unfortunately upon x y upon x कुछ तो होगा यार कुछ तो होगा जो मैं कर सकता हूँ इसमें dy upon dx something like that okay no idea x से भी डिवाइड कर दिया अपन से कुछ करके देख लिया it's not helping x से डिवाइड करना पागलपन बिकॉज yeah just doesn't help प्लस वन का यार ये बस अगर ये प्लस होता तो ये हो जाता था राइट मोर ओवर ये पूरा गंदा लिखा हुआ सोल्यूशन आई डोंट थिंक कि कुछ करेक्ट है देन लाइक what do you want like 4y of 2 minus y of negative 1 or something what if it's like some kind of polynomial yeah that would say what if it's some polynomial it would have made sense right okay so let's just say x times of x minus 1 times something oh that would work hey you know what let's do it so just say y is equal to x times x minus 1 times f I have no idea कि कितना काम करने वाला है but just try it out so यहाँ पे क्या होगा वो x times x minus 1 हर जगह से हट जाएगा it's just basically dy upon dx minus f is equal to x times x minus 1 अब dy upon dx कैसे निकालोगे just x minus 1 times f plus x times f plus x times x minus 1 times f dash and plus f is equal to x times x minus 1 so मतलब क्या हुआ that like ये तो 2x minus 1 हो गया बहुत बुरा हो रहा है ये तो then that plus f okay so like just 2x so x times x minus 1 that's supposed to be negative yeah ये negative चाहिए था so x times x minus 1 times f dash minus 2 times of x minus 1 yeah right that is of f this is equal to e just equal to x times of x minus 1 so yeah x minus 1 to gaya this is this thing x f dash minus 2f is equal to x finally something that we can do right x and multiply by just x square actually x in when x square is divided like 1 upon x minus 1 x square is divided x cube is divided 1 upon x square f dash minus 2 upon x cube f is equal to 1 upon x square awesome इसका मतलब हुआ कि the derivative of f dash upon x square because yeah is equal to 1 upon x square so like
f dash upon x square is equal to यहाँ पे negative y ना 1 just negative 1 upon x plus some kind of constant, but the f dash is, as we guess, some kind of polynomial. And what was f dash actually? यहाँ पे x was basically this thing, x times of c minus x जो भी, and f was what? It's like y upon it was just y is equal to x squared times x minus 1 times c minus x, where c is some kind of constant. Awesome, right? और कुछ कंडीशन दी है तुम्हें? कुछ भी कंडीशन नहीं है, बढ़िया. Then 4y of 2 minus, so जब इसमें 2 put करोगे, what do you get? Like, okay, let's actually do this thing. So 4y of 2 चाहिए अपने को, 2 इसमें यानी कि 4, and then just have 1 over there. So 16 times c minus 2, I guess. Oh god, what is this? Y of -1, but e16 तो इसमें आए. Just frustrated at this point. This should really have worked. ये क्या हो रहा है ये? We even got the solution now. Still doesn't work, huh? How could it not work? We even got f correctly, right? Our f is just this thing. Okay, yeah, f is just f, sorry. And y was x times x minus 1 times f. So do the thing, we get this thing. अब वही, yeah, like c तो अभी भी unknown है यार, अपन कैसे से कुछ कर सकते? This is not doable. It's not doable. 49 is just weird. क्या है यार, ऐसे अजीब questions, just not nice. इसलिए एक बार चेक कर लेते हैं कि अपना सोल्यूशन सही है कि नहीं. So the x square times x minus 1 times c minus x है ना अपना सोल्यूशन, right? Let's check if it's correct or not. So yeah, right, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे? x cube times x minus 1 का स्क्वायर. Okay. Oh wait, why is that the thing? चलिए, then इसका डेरिवेटिव is -1, like whatever. इसको अपन ऐसे बोला था ना, x times of c minus x को, like once again just form the equation. It is x times x minus 1 y dash minus what? Minus x times x minus 1 times f, right? So f वो तो मरने वाला है यहाँ पे, that just equal to x times of x minus 1. So y dash, okay, इसका डेरिवेटिव is just 2x times x minus 1 times c minus x, फिर x square times c minus x, फिर नेगेटिव में आएगा just negative of x square times x minus 1, okay, minus f just minus x times of c minus x, that's equal to x times of x minus 1, you are saying. Look at that. That was f, right? Yeah. I hope so. कुछ गलत किया अपन ने? नहीं, लग तो नहीं रहा है. This should work. So हाँ, क्या होगा फिर इसमें? अब c minus x में कॉमन ले, c minus x कॉमन लिया, क्या क्या बच रहा है? 2x को minus 2x plus x square minus x, just that, then minus x square times x minus 1 is equal to x times of x minus 1. Okay, interesting. Wait, नहीं यार, c should be actually, yeah, that c should be there unless it cancel हो जाए अपने आप, but ये तो cancel होते हैं जो दिख नहीं रहा है. Yeah, I don't think it will cancel by itself. Wait, am I going wrong somewhere? ये इतना problematic क्यों है? It's not even cancelling. बढ़िया. हो गया, फिर अपन ने गलत कर दिया. That's the only possible solution, कि अपन ने गलत कर दिया. Solve सही से नहीं किया. ठीक है, just move on. This is very weird in the first place. ठीक है ना, just, or should I even, okay, should I actually give this another try? Just give it another try. तो अपना क्या assumption था that y is x times x minus 1 times f.
right? चलो then just try it once again. So x times x minus 1 times f with a y dash आएगा, y dash minus y जिसमें x minus वो गया minus f is equal to x square minus x, right? Okay, so y dash is just x minus 1 times f फिर x times f फिर x times x minus 1 times f dash then minus of f that's equal to x minus x मतलब कि x times, so what is this, uh, x times x minus 1 f dash और यहाँ पे क्या आएगा प्लस, so 2x minus 2 यानी कि just 2 times of x minus 2 shit x minus 1 f is equal to x times x minus 1 मतलब क्या हुआ इसका x minus 1 तो गया हर जगह से और either x equal to 1 that would be not good, so just x f dash because सब x के लिए काम कर रहा है देखो, so x f dash plus 2f is equal to plus, oh okay plus, समझा समझा क्या गलत हुआ मेरा, ओके प्लस चाहिए था, फाइन इक्वल टू एक्स, राइट, एक्स से मल्टीप्लाई करो एक्स को, हाँ समझा यार, शिट टाइम वेस्ट कर रहा हूँ मैं, डेरिवेटिव ऑफ एक्स टाइम्स ऑफ एफ is equal to x square, so like x times of f is just equal to x cube upon 3 plus some kind of constant, मतलब कि f is just x square upon 3 plus some kind of constant, right? Oh, okay, must be x of course. Okay, that's why this thing. Yeah, wait, no, it's like x squared. Yeah, I'm sorry. So it's this. F is just x upon 3 plus some constant upon x square actually. So फिर ये काम कर जाएगा, right? Okay, so f of 2 is like 2 upon 3 plus c upon 4. F of 4 is just 8 upon 3 plus c. फिर minus y of -1. So -1 यानी कि यहाँ पे -1 upon 3 होगा, c आ जाएगा, like वो गया, c मर गया, just this thing. Minus minus plus. So 9 upon 3 which is 3. So oh god, 9 upon 3 ना ये क्या, हाँ 9 upon 3. Oh ये तो f है, अपने को f नहीं चाहिए अपने को, oh okay, you don't want f, you want y, what you got is just f, so y will be x times x minus 1 times all of this, right? Okay, this is not going good. This is like x squared times x minus 1 upon 3 or plus, what is this, x times x minus 1 which is x minus 1 upon x times c, right? तो चलो फिर ट्राई करते हैं. When you will put 2 it just becomes what, 1 upon 2 4 times, that's 2c, और जब तुम -1 पुट करोगे it will just become, oh yeah it will actually work out just 2c, so वो तो गया, ये तो वैसे भी चला जाएगा in that case. Awesome, बहुत टाइम वेस्ट कर दिया मैंने, बढ़िया. oh god, so just तुम 2 पुट करो फिर इसमें 4 times 1 upon 3, फिर 4 times that just 16 upon 3 minus y of -1, नेगेटिव पुट करो just -2 upon 3, so plus 2 upon 3, negative upon 3 which is just 6. So D is the answer. Next question. Oh ये तो हो गया था, sorry. D 50. Number of functions a to b where a is equal to this thing and okay to b such that f of 1 is not equal to a, f of I is not equal to ai. अच्छा, so 1 का a1 नहीं करना आपको, ठीक है, so yeah like फंक्शन चाहिए ना आपको, so 1 का a1 नहीं करना, इन सब का अपने कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, so otherwise a2 a3 यहाँ कोई भी इनमें से कोई भी चूज कर लो, so हर एक के लिए 4 चीजें रहेगी अपने पास में, what's the big deal, yeah just 4 power 5, right, the 2 power 10 यानी कि 1 0 2 4, so C is the answer. What's the big deal about this? 51, the value of this thing, so cot of 7 pi upon 6 plus 2 cot of 3 pi upon 8 plus cot of 15 pi upon 6, that's weird. 7 pi upon 6 like 8 pi plus pi minus, right, so pi upon 2 minus pi upon 16, right? Yes, so tan of pi upon 16, फिर ये चीज़ क्या होगी, 3 pi upon 8, it's really the same thing, right, just pi upon, so this is 2 tan of pi upon 4, shit not 4 just 8, okay, and then यहाँ पे तो डायरेक्ट pi आने वाला है, just cot of
right? So just pi minus pi upon what? 16. So just cot pi वो negative आएगा ना plus. Yeah. Okay. This is the thing. Fine. अब क्या? So अच्छा तुम इनको यूज करो ना of course. So like s upon c minus c upon s, which is just negative of cosine of 2 theta upon like okay यहाँ पे 2 डालो just sine of 2 theta, okay, which is like negative cot of negative 2 cot of 2 theta, right? So negative 2 cot of pi upon 8 plus 2 tan of pi upon 8. This is going very weird. फिर सेम चीज करो बट यहाँ पे नेगेटिव, okay, so like वो 2 बाहर आ गया and then it just becomes yeah like another negative, so it's just negative आने वाला है and then it's 4, so 4 cot of pi upon 4 आ जाएगा, मतलब ये क्या 4, so negative 4, which is C. Next question. 52. A variable straight line passes through the points of intersection of the lines x plus 2y equal to 1 and 2x minus y equal to 1 and meets the coordinate axis at A and B. Lowest of the midpoints of A, B is variable straight line, दो okay, points of intersection of these two lines ढूंढ लो पहले तो, right? So क्या है x plus 2y equal to 1 and 2x minus y equal to उसको double करो just 4x minus 2y equal to what? 2. Okay, so that just x is equal to what? 3 upon 5, which means that y is equal to क्या? So इसमें ये put किया okay, y equal to 2x minus 1, which is just 6 upon 5, 1 upon 5. So तुम्हारा 3 upon 5 का 1 upon 5 पॉइंट है, एक वेरिएबल लाइन है जो कि से पास हो रही है, and this means the coordinate axis in A and B. The locus of the midpoint of AB is oh, इसको अपन h comma k बोलते हैं बेसिकली. So like h comma k से पास हो रही हुई एक लाइन है and right. So ये दो पॉइंट्स पे मीट करने वाली है इसको एंड यू जस्ट वांट लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए बी. ओके ओके ऑसम. ओके जैसे तुम्हारी जो लाइन है एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1, ये तुम्हारी लाइन है. सो ये ऑफ कोर्स ये वाला बी होगा, ये ए होगा, वट एवर. तुम्हारा जो मिड पॉइंट इज लाइक ए अपॉन 2 एंड बी अपॉन 2, ऑफ कोर्स दैट्स आवर मिड पॉइंट. एंड दिस लाइज ऑन दैट लाइक एच अपॉन a plus what k upon b is equal to 1. So basically ऐसा हो रहा है ना कि h upon just 2 times the x coordinate हो गया इसका and then plus k upon 2 times the y coordinate is equal to 1 or something, right? So not exactly a conic, that's bad, which means like hy plus kx is equal to 2 तो वहाँ पे मतलब just yeah just equal to 2 times of xy. So 2xy minus hy minus kx is equal to 0 basically. अब कर तो इसे पुट क्या h और k अपने, so just 2xy minus कितना h अपना 3/5, so उसमें 10 तो आने वाला है, just 10xy minus 3y minus x is equal to 0. हाँ ये भी चलता है ना, x plus 3y minus 10x, हाँ भी चलता है, right? So A is the answer. Next question. 53. 53 is what? Let a circle touch the sides B. Sorry, what? Side BC at P and AB and AC produced at Q and R. अच्छा पहले ट्राइंगल ABC की बात कर रहे हैं अपन. ABC एक ट्राइंगल है, एक सर्कल है that touches the side BC at P, okay, and AB and AC produced at Q and R. Okay, तो ये वाले पॉइंट्स है, फाइन. इसका एक सर्कल, फाइन. If the sides and angles of the triangle ABC satisfy this relation. अच्छा P plus C, ठीक है जो भी है. Right, then the length of tangent from A to the circle is. This looks familiar for some reason. Right. Right. Cosine A plus cosine C, that is not 0 unfortunately. So वो अपने आप काम नहीं करेगा. I'm sure I've seen this somewhere. So like A plus E plus C, just the perimeter. Perimeter is the summation of cosine A minus क्या summation of A cosine A, right? Yeah. So okay. So
A is like proportional to sine of A, you can say so. So ये कैसा हो जाएगा कि sum of sine A times sum of cosine A minus sum of sine A cosine A, right? ये जो चीज है that's equal to 20 basically. Okay, interesting. Oh अच्छा ये shit यहाँ पे length दिए, zero नहीं दिया. Oof, that's problematic. इससे अच्छा कुछ चाहिए था. Whatever. Then the length of tangent from A to the circle is that tangent from A to the circle. So ये चीज, right? Well, we know this is just a semi-perimeter because like this is just what ये A because ये यहाँ पे use हो जाएगा. A के parts करो and then ये यहाँ पे use हो गया. ये exactly half is जो भी है. Where do we have to tell this? Like okay, 2 times of this thing इसको enclose कर लेगा half. So just semi-perimeter. This thing is just semi-perimeter, right? So आपको basically वो semi-perimeter ढूंढना है. So you just have to figure out the parameter actually. Okay, interesting. Wait, आपने कुछ और दिया नहीं यार. सिर्फ ये बोला कि ये टच कर रहे हैं एट पी क्यू आर, और कुछ अपने को बोला ही नहीं. व्हाट, सीरियसली? बस सेमी पेरीमीटर ढूंढना है, इतना ही है और कुछ नहीं है. ठीक है. This is equal to 20, right? Awesome. You can always use this thing. A is equal to 2r. What was the thing, like 2r and sine of A, right? ये चीज अपन हमेशा यूज कर सकते हैं. And it just becomes what? 2r तो बाहर निकाल लिया. It's just I don't exactly like this. और तरह से करना पड़ता है. So 2r is equal to A upon sine A, which is also equal to summation of A, मतलब कि क्या, the perimeter upon summation of sine A. Okay, interesting. So the perimeter, I get that. That's pretty obvious. जो फिर A रहेगा, A can be written as, so 2r के ऊपर बस ये चीज पुट कर दो, just the perimeter times sine A upon summation. That was pretty obvious, isn't it? बस वो उसको बाहर निकालो, जो summation of cosine A, oops, cosine A minus summation of sine A cosine A upon summation of sine A, and this thing is equal to 20. Okay, so all right then, P फिर ये summation of sine A times summation of cosine A आने वाला है. What is summation of sine A? It's like 4 product of cosine A upon 2, I believe, because for example 3 upon 2 आएगा यहाँ पे, and then oh god, A upon 2, right? So A जब 60 degree, and then yeah, like 3 square root of 3 upon 2, and then this is just going to be cosine of 30 degree, which is square root of 3 upon 2. तो फिर वो अपने आप, right, it will just be what, 3 square root of 3 upon 8 times of 4 is it? हाँ वो काम कर जाएगा in that case, which means yeah, this is actually correct. So that's just summation of sine A, just 4 product of cosine A upon 2, right? And then summation of cosine A, that's like 4 product of sine A upon 2, but plus 1. So for example 60 डिग्री पे क्या होगा, 3 upon 2, 3 upon 2, हाँ तो वो काम करता है. Is this thing for product of sine A upon 2 plus 1 or something? Starting to have bad feelings about this. Yeah, it's not good. Wait a second. You can write it using products. Cool. What about this thing? You can write like 4. Yeah, so this is a 1 upon 2 summation of sine 2A, which is 1 upon 2 times 4, like 2 आ जाएगा पे. So it's 2 product of cosine A, right? No, just sine actually. So 3 upon 2, हाँ वो हो जाएगा अपने आप. So this is the thing, but then you can write it like 16 product of, बस वो 8 बाहर जाएगा. So sine A upon 2 cosine of A upon 2, right? And now look at that, isn't that the same? ये तो मर जाएगा ऐसे भी. All you get is like P times 4 product of cosine A upon 2, right? बाकी सब तो अपने मर जाएगा. That is just equal to 20. Okay, this is weird. इसका मैं क्या करूँ आखिर?
What of cosine a upon 2? How do I even use this? This is not usable actually. Oof. यहाँ पे कुछ भी अजीब हो रहा है, right? Yeah. Length of the अरे यार मुझे पैरामीटर चाहिए, ये सब मुझे नहीं चाहिए, but for some reason I'm getting this as well. What's going on? Why is this wrong? इसका मैं क्या करूँ अब? It's like summation of cosine. I get that, but like okay, p summation of cosine a क्या अब मैं क्या करूँ? Equal to 20. Length of tangent from A to the circle is what? हाँ, इसमें क्या है? 20, 10, 40. ओके, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 3/2 होती है ना, बिकॉज जो मिनिमम वैल्यू रहती है दैट विल हैपन एट like okay it's completely chance. Yeah, I guess that is the case, right? So 3/2 is maximum value, but okay, p की critical एक वैल्यू होगी 40/3 or something which is like okay, so हाँ, 10 से थोड़ी बड़ी, 20 से छोटी, between 10 and 20, right? That's what the maximum is. So 10 काम कर जाएगा, but then 20, no idea, can't happen, right? Yeah, because it can't be 20 actually. Wait, नहीं, ये maximum value तो अपने को minimum देखना पड़ेगा. It's getting so complicated. Square root 2 versus 3/2. For 3 is तो बड़ा है, like 3/2 is the maximum. It's like p की minimum value would be 40/3, I guess. Yeah. फिर 10 काम नहीं करेगा. Okay, what about 40 itself? What is the minimum value of this thing? I don't know. Could be anything. एक को ऑप्ट यूज कर दिया, क्या पता. जीरो, क्या जीरो भी कर सकते हैं शायद से, राइट? कोसाइन का सब जीरो हो गया. That's weird. क्या हो सकता है कि समेशन ऑफ कोसाइन सब जीरो हो जाए? For that to happen, ये जीरो, like okay, से एक को फिर in that case like it has to be zero. या फिर कभी जीरो नहीं हो सकता. Okay. Oh, it's not summation of cosine. It's like summation of sine A. Sorry. Oh, that's very different than case. So, right, so sine is like A upon 2 नहीं, just summation of sine A. Okay, cool. So, हाँ, मतलब क्या होगा कि P is equal to this is very weird. It's like this. Shit. क्या हो रहा है ये? कुछ भी नहीं समझ रहा है मुझे इसके आगे. ओके, इसलिए ओके, यहाँ पे अपॉन समेशन ऑफ साइन, राइट. ये अपॉन समेशन ऑफ साइन ए था यहाँ पे ऑलरेडी, सो ये तो मर गया एक्चुअली. जस्ट p इक्वल टू 20, सो s इक्वल टू 10, मतलब कि वो r में जस्ट 10 है. सो b इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन 54. is if y square minus x squared की power 1/2 is plus y square plus x square की power 1/2 is equal to 2 की power 1/2, then 2y cube t squared y upon अच्छा, y is a function of x in that case. Fine. Whatever. Square roots वगैरह में दिया, not good. You will need y as a function of x. करो फिर स्क्वायर करो, एक काम करो, पहले तो इसको उधर भेज दो, then square, just y square plus x square is equal to 2 plus y square minus x square, and then we just have what? Minus 2 square root of 2 times of y square minus x squared, right? मतलब ये तो गया, it's just like x square is equal to 1 minus square root of, ठीक है, so the square root of 2 times of y minus x squared, that is equal to 1 minus x squared. So इसको square कर दो, just y square minus x squared plus of that, that's equal to 1 minus 2x squared plus x power 4. So that means like 2y squared is just equal to, what 2x कर गया, it's gonna get cancelled, so just 1 plus x power 4. This is the thing, right? So y square is just equal to 1 plus x power 4 upon 2. Interesting. And what do you want? Just want 2y cube times t square y upon dx square. So एक काम करो, y को square root of this thing कर दो. Who cares?
नहीं यार, but second डेरिवेटिव अपने को लिखना पड़ेगा. Seriously. Fine, it's like 2y. I don't like this. So इसको 2 उधर ही रखो. This term क्या हो जाएगा? Like 4y dash is equal to 4x cube, right? So y dash, y dash is equal to x cube basically. And what you want is like second derivative. So इसको एक और बार differentiate करो. Just y dash squared plus y double dash. Uh, yeah, this thing. It's just so weird. Fine, whatever. This is equal to what? This is equal to 3x squared. Yeah, isn't that weird? And what do you want is like y cube or something. Okay, fine. So इसको y square से multiply कर डालते हैं. Just like y dash का square plus y cube y double dash. That is सही से किया मैंने सब कुछ. I guess yeah. And this should be the same. Cool. Is equal to 3 y cube x squared. No, like y squared x squared. So okay. So y cube y double dash is equal to what? So पहले y square मुझे चाहिए. Y square and you want like 2 times of that actually. So ठीक है ना, 2 that's like 6. यहाँ पे आ जाएगा 3 times of 2y square, just 3 times of 1 plus x 3x squared times 1 plus x power 4 minus 2 times of किसका square? X cube का square x power 6. Awesome. So this will be what? 3x power 6 minus 2x power 1x power 6. X power 6 plus 3x squared. Which is C. Next question. 55. 55 is let f sub n theta be equal to this thing where theta is less than pi upon 2 power n plus 2, then the value of f sub 10 pi upon 2 power 13 is okay. Plus tan squared of 2 power n, okay, upon minus tan squared of something like that. Okay, not good. So square aa raha hai. It's like 1x extra, right? I see what's going on, but ये थोड़ा अजीब है. वो 1 माइनस tan square का मैं क्या करूँगा आखिर? Yeah, that will be a problematic thing. Some other way. Some other way. I can't think about it. Must be some other way. Let's do that thing, right? One thing. Telescoping something like that, right? N equal to 1 to n. Okay, पहले बात तो ये इंडेक्स गलत किया इन लोगों ने, बट व्हाटएवर. R equal to 1 to n और फिर यहाँ पे जगह पे R डाल दो. बट या इन दी एंड अपने को ये सॉल्व करना है इस तरह से. Tan squared then 2 power n आ रहा है इसमें. So next जो रहेगा इसमें, right, so 2 theta आएगा ना इसमें. Okay. So somehow you want to write using, so like इसको सिंप्लीफाई करते हैं. 1 plus tan theta, अब सिर्फ थीटा का आंसर है अभी तक. प्लस tan थीटा का स्क्वायर, इसको अपने को सिंप्लीफाई करना है यूजिंग tan 2 थीटा इन सम वे, राइट? या हाउ वुड यू डू इट? वो यहाँ पे tan स्क्वायर चाहिए. So you know, like 1 plus tan square theta upon that can be used in a way. Not good, not good. Something else like 2t अब मैं यूज कर सकता हूँ, but that's just running away. It's running away from the thing. Come on, think. It's like 1 plus t square का square. Okay, that is stupid. We don't want to be doing that. Okay, ये तो एक अपन ने बाहर निकाला थे. ये वेट, ये 1 minus t squared का स्क्वायर है, राइट? ओके, इंटरेस्टिंग. 1 minus t का स्क्वायर, हाँ वो कर सकते हैं, बट नॉट गुड. और फिर यहाँ पे आएगा 1 minus t squared एक और. देन यू नीड समथिंग फॉर दिस. इससे इसको 2t और t से कर ही दो ना, किया जा रहा है. सो व्हाट विल दिस बी लाइक? ये रहेगा like नीचे आ जाएगा cosine of 2 theta, and this thing is what, like tan of 2 theta, and then just want this times of 2 tan theta or something. Now isn't that weird?
Sure is. कुछ और ऐसा इससे थोड़ा अलग हो, समथिंग एल्स। प्लस 10 स्क्वायर चाहिए ना अपने को। ओके, okay, I like 2t and that's okay. That would have made sense, maybe. I mean, who knows? It could have made sense. Hmm. Oh, I know a way. I know just a way, not probably the way, but sort of maybe try करके देखते हैं ना. So this I write like this thing. So 1 upon 2 यहाँ पे 2 है, तो मैं introduce करूँगा, but 2 is just 1 plus t square plus 1 minus t square, right? So this will what, like 1 upon 2, just 1 plus t square plus minus t square plus square. So that's like secant square of 2 theta or something, because नीचे cosine of 2 theta आएगा. Yes. Okay, and what else? तो just plus, so ये तो 1 है तो मर जाएगा, and that's just this things like cosine of, yes, like secant of 2 theta. Okay, very interesting. So it's this thing 1 upon 2 and then you got secant square of, okay, come on, 1 upon 4 का डालो इसमें. Who knows, it might just work out. Well, okay, it won't work out. इतना क्लोज था मैं इस चीज से. Now ये काम नहीं करेगा. Okay, come on, think something that you can do is like 1 upon c square plus 1 upon c is like what, 1 plus c upon c square. ये क्या यार, ये तो चलते ही जा रहा है. You can represent 1 upon plus t square, cool. Secant 2 theta can be written in a different way. Okay, that's doable. Not useful. What's that's actually useful? कुछ तो वैसे जो कि यूजफुल हो. What would that be? Tan square 2 बार चाहिए अपने को. Then is secant of theta. उसका स्क्वायर हो गया, right? Because secant square of 2 theta. And then दूसरा जो secant of 2 theta है. Now what? Now what do I do? Cosine square of 2 theta आएगा यहाँ पे, and then you just want 1 plus cosine of 2 theta, right? You can always do like 2 sine square and what not. Yeah, that will work out. 1 up, okay, 1 upon 2 theta. It's like 2 sine of sine square of theta upon cosine square of 2 theta or something like that. This is not helping. It's not helping, yeah. How is this going to help you? I have no idea. Square of 2 theta. How is this helping? No, it's not. I want something else. ये तो काम ही नहीं कर रहा है. So what, like f sub 10, so n equal to 10 तक, and then pi upon 2 power 13. So तुमने थीटा की वैल्यू पुट कर दी इसमें. बढ़िया. अब क्या, wants to be telescope somehow, पर प्लस को साइन है इसमें somehow यूज किया है. ओके, जो सीकेंट दिख रहा है सिर्फ उसका कोसाइन कैसे यूज किया इन लोगों ने. like cosine 2 theta. Oh, it's not sine square, it's cosine square of course, but yeah, still उतना ही problematic है. That now we are stuck. We can't go further. Something. That's square minus 10 square minus 10. I did the thing. I minus 10 square and minus 10 square. Yes, I did that, but then it's not even useful. It's not helping. वैसे भी करके कुछ हो नहीं रहा है, right? Looks like okay, 1 minus 2t मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस करूँ and then plus 2t इंट्रोड्यूस करूँ, something like that. फिर इसको ब्रेक करूँ तो इस समय that could have worked out. That could work out, right? नहीं, कैसे काम करेगा? We don't know for sure. Why am I so stuck over here? कुछ जा तो रहा था यार, यहाँ पे अटक गया हूँ. इसके आगे क्या, लाइक इसको 1 स्टैंड्स पर लिखो चलता, बट उसके आगे कुछ नहीं कर पाएंगे. आई हैव टू थिंक क्या करूँ कि ये काम करने लगे फर्स्ट.
First I have to make this work. इसको tan में convert किया प्रॉब्लम है हर तरह से प्रॉब्लमेटिक है okay you are using cosine okay how is this going to work cosine कैसे यहाँ पे सिर्फ secant यूज हो रहा है so like cosine ये फॉर्म को तुम्हें cosine में कन्वर्ट करना है you did this thing but इसके आगे क्या no it's not useful how cosine of शायद से पे उल्टा चाहिए और इन लोगों ने गलती से माइनस या आई थिंक यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस चाहिए होगा देन मे बी इट्स लाइक दैट ओह ओह या राइट राइट ये उल्टा ही चाहिए था ऑफ कोर्स wait what is this thing oh shit it's a product oh यार सीरियसली ये प्रोडक्ट है इट्स नॉट अ सम मैं क्यों पहले इसको पनिश कर रहा हूँ जिस प्रोडक्ट है इतना ही काफी था अपन अपन बेस्ट पोजीशन पे आ चुके हैं अब इट्स जस्ट दिस थिंग व्हिच इज व्हाट cosine square of theta upon cosine square of 2 theta इसका सम करना है राइट yeah just start putting the stuff in it's like cosine square of so n equal to 1 right cosine square of चुना था ना times 2 power n and then 2 power n plus 1 actually right फिर यहाँ पे क्या n equal to तुमने 1 put किया just this times of 2 right okay so cosine square of 2 theta then cosine square of 4 theta and then चलते जाओ cosine square of 8 theta आएगा because yeah चलते जाओ eventually get what cosine square of 2 power n theta upon cosine square of 2 power n plus 1 theta so ये सब तो चले yeah ये सब मर जाएगा it's not this thing is actually this thing तो ये सब तो गया right ये इस टाइप से जाएगा which is cosine square of 2 theta upon cosine square of 2 power n plus 1 theta right yeah अब जो yeah what you want you want cosine so like square किसका जो भी है cosine square of पहले तब 2 theta चाहिए so theta is pi upon this thing like pi upon 2 power 12 upon cosine square of n कितना है अपना 11 okay so 2 power 11 times pi upon 2 power 12 oh it's not oh actually this thing sorry it's like this actually anyway just pi upon 4 जाएगा that is right just 2 ऊपर गया and then you check like what 1 plus cosine of pi upon 2 power 11 so B is the answer next question बहुत टाइम ले रहा हूँ मैं आज I guess we should stop now because already 1 घंटे के ऊपर पहुंच गया होगा अभी तक so then that's it I'll see you guys in the next video